that to help save the planet, we are trying to have a kind of a lifestyle change, and we try to in fact propagate it as well. We also felicitate those warriors who have been trying to take every small step to make a change in your thought, or to in fact make that big change when it comes to saving the environment. Now, I'm joined in by Kabir in our studios. Who's also wearing a green jacket today to green, actually, motive that we've gotten here together for, and we're going to quickly cut across to the event as well. But before that, Varghese, how about we tell the viewers what exactly is going to happen today? There is going to be an inaugural session essentially, and there's going to be keynote addresses. There is going to be a proper felicitation process. The green warriors are going to be felicitated. There are going to be films on each of them that are going to be played out, so you'll understand what each one of those warriors has actually done. I mean, it's easier said than done. I mean, I'm just wearing a green jacket and trying to, harp on all the credit. But those are the actual warriors that have done the work on the ground, be it cleaning up of little beaches or areas, cleaning up of, drainage systems, or ensuring that sustainable development as a, as a real and important part of one's curriculum in a student's life is carried out inside schools as well, Varghese. So these are important people that are going to be felicitated by also Kabir, when it comes to changing a lifestyle, one thing is that energy is required, and let us accept the fact that in an industrial world it is very difficult to have or produce green energy as the way we think it should be produced. But also you can actually go ahead and ensure that your lifestyle changes could contribute to a less degree of heaviness on the environment, and at the same time conserve energy, so that you don't need to go ahead and exploit nature for more energy that you might put. Simple solutions that we are talking about, and I was actually going through some of them. Very simple. Switch on the, switch off the lights when it's not required. Ensure that you don't have, you switch off the electric appliances if it's not in use. These are very simple things, but it goes a long way in when it comes to having the environment. But again, the challenge is to have a lifestyle that is very suited with the environment. How do you change your lifestyle that would, at a larger sense, if a lot of people do in fact go ahead and adopt that kind of a lifestyle, what happens on the larger factor? Because larger energy output. So what you're trying to do is conserve energy and stop the exploitation of nature for that energy as well. Many wouldn't know, Varghese, something that we were talking about, that only yesterday Delhi inaugurated its third landfill site, and you were very quickly responding back by saying that this is what happens in Bengaluru, this is what happens in Delhi. How in Bengaluru a particular landfill site has been given as a contract, which once the contract expires, you clean it up, you put sand on it. It's a proper process, something that isn't being carried out in the national capital per se. But today, importantly, there are several key panel discussions that will take place, Varghese. Panel discussion, the first one is going to be India setting the global green agenda, which India has been. You talk about the COP summits, you talk about various other summits. At every international platform and forum, the Prime Minister has made it a point to put forth the idea that green revolution, focus towards the green and sustainable development has to be the key. If all, the entire global economy has to move forward, focus has to be laid on the Prime Minister made those statements on the assumption that, first of all, please understand, the basis of any economy is going to be agriculture, and agriculture means we need to grow plants. And when we talk about plants, there are several factors that contribute for the growth of the plants, from rains to weather situations and other things. And that is why he made that statement, saying that unless we have the basic part of that economics pyramid strong enough, that is to ensure that there is a good environment in which you have the food crops to grow, then you are safe. But if you don't give that environment, then of course the polluted environment will actually play havoc, probably also hinting at the nature of climate change that has been affecting food production across the world. Food production has been affected across the world when it comes to the nature of climate change that we are seeing. And the Prime Minister yesterday in the Parliament address also spoke about how, other people are calling out India's food security, but that's actually not the truth. Don't listen on what everybody is saying. India's economy is resilient, our food security is right there. Today, right after the inaugural session, which involves the context setting opening remarks, which is going to be done by our very own Surbhi Sharma, then a Vande Mataram theme song is going to be played out.
and this is going to be done by the artists of the blind school. After which the event recounting of the My India, My Life goals campaign and the theme and the objectives are going to be laid bare in front of everybody at the attendance. The keynote address by the chief guest comes next, and the chief guest at today's event, and we're going to cut shortly to it, is none other than Meenakshi Lekhi, Minister of State for Ministry of Culture and External Affairs. So Meenakshi Lekhi is going to be giving that keynote speech. I told you that the first panel discussion is going to be India setting the global green agenda, but take a look how the discussion ball is going to roll further. The second panel discussion is going to be India's young focus on life goals. You've got Hina Saifi, Aditya Mukherjee, who's environment activists chosen by the United Nations for Global Climate Change Campaign. Our very own Shweta Kothari is going to moderate that particular discussion. Later on, the third panel discussion, if any one of you wants to join in only for the third panel discussion, then the time for that, the tentative time for that is of course somewhere about 2 p.m. and the third panel discussion is going to be on the green line, the new bottom line for India, inclusive and incorporate. People, planet and profit. So when profit is something that people focus on all day, then how about we look at it from the prism of people and planet, which is going to be another interesting decision to take, because everybody is interested in making more money, but at the same time you have to balance out the exploitation and our needs for resources coming from Mother Nature directly. That's going to be the third panel discussion. You've got a special 6-minute film on the Hawa Badlo, a path-breaking environment awareness campaign by Gail. Surbhi Sharma, our very own anchor, is going to moderate that particular discussion, and then that movie is going to be played. It's going to be a little bit of a breather between the third panel discussion and the fourth one, and the fourth panel discussion is going to be on Millet Sure Mera Tumhara, and this is the year of the millet. Let's not forget, when the Prime Minister was in the United States, in New York, there was a millet, actually, there was a proper millet menu, even at the proper official state visit and the state dinner that was hosted by Jill Biden at the White House. There was millet that was used in the gourmet vegetarian menu that was also lavishly put on. When it comes to millet, we have been talking about how millets can actually withstand a lot of harsh environmental conditions, and there have been attempts to actually move from rice cultivation and to have millet as a rotating crop, so that there are other grains that are introduced, and millets are fine when it comes to this kind of agricultural practice. It's good for health. It's good for health, and at the same time it's also good for the soil. It's also good for the rotation way of agriculture that we are looking at. It so benefits way more than the negatives. Yeah, when it comes but to the millets. Problem has always been is that millet to a large extent has been part of only certain cultures and certain agri societies where they have used it in their menu, and it takes time to actually propagate. But right now a lot of people are discovering millets, and the government of India has also been pushing for the introduction of millets. Millet to win it. That's the mantra of the Indian government this year. It is the year of the millets. After Millet Sure Mera Tumhara, the next panel discussion, which is the fifth panel discussion of the day, ladies and gentlemen, is going to be World Takes Shine to India's Green Energy Success. Vineet Mittal, Chairman CII Renewable Energy Council and Chairman Avada Group, Ram Babu Paravstu, who's the chair at the FICCI Climate Change Committee. They're all going to be part of this panel discussion, and it's not just this particular panel discussion throughout the day. You have the right voices, so do not miss out on it. I'm going to read it again. You've got one-on-one with the Green Warriors after their felicitation. That's going to happen. So right at the beginning, you've got the Green Warriors. Why we're here, TV9, News9, everybody's there to felicitate the Green Warriors, the people who've actually done the dirty work on the ground. We don't talk about them as much. They never come to the fore. All the limelight is half by big conglomerates and companies, but these are the people who actually do the work on the ground, Varghese, and it's important that we respect them and we felicitate them and we put it out there for the people and the common folk to consume and to know who these people are, or who these faces are, and what they actually do. So that's going to happen right at the beginning, and followed by the panel discussions. Before you in fact went into that, I was in fact reminded of a conversation that I had with an environmental. It's a very young child, in fact, probably it was 2 years ago, and she was around something like 12 years
years old. So she told me something that hit me immediately. She said that the planet doesn't need saving. The planet is always going to be there. Yeah. It is you who need to be saving because you're dependent on that ecosystem of the planet to survive. But Your this ecosystem year- is what is but getting this affected. year- So you need to save humanity, not the planet. So I was like, oh my God, actually the child has got so much of knowledge of what she's doing. My nephew at home, when you saw the spate of river Beas and the Ganges and what happened in Uttarakhand and Himachal Pradesh in terms of the extreme weather events, the extreme heavy rainfall. You saw what the rivers did, right? I mean, entirety of trucks going for a swim. And my nephew comes and tells me that this is just Mother Nature taking back reclaiming her own space. This is Mother Nature trying to fix her own self because you're not helping even a single bit. I mean, that kind of, it's so great to see that, youngsters today are in More fact talking about environmentally this. conscious. Absolutely. And at the same time, again, reiterating the list of panel discussions, you've got India setting the global green agenda, India's young focus on hashtag life goals, green line, the new bottom line for India Inc., people, planet and profit, millet sure mera tumhara, that happens next. Then panel discussion number 5, world takes shine to India's green energy. And then you've got another set of felicitation that's going to take place. Green warriors are going to be felicitated. You've got films on each of them that are going to be played out before they are felicitated so that you get an understanding of what they've actually done. And several intense, films that, I've also seen a little bit of snippets of those really cool ones. The word on the ground needs to be disseminated. And the work that they're doing on the ground is, kudos to them, of course. After which, there is going to be a pledge. Everybody is going to collectively take a pledge, and it's important that us back at home, we also, subscribe to that pledge. We also take it up, and we take that oath of, bettering Mother Nature for the years to come. Sustainable development, we talk about it in school, but how often do we practice it on the ground? That is the question. Meanwhile, the TV9 and the entire fraternity is going to urge everyone in the audience to pledge to follow the life goals as responsible citizens of India. And shouldn't we all take up that pledge? I mean, maybe we can make that pledge as part of a campaign that we can begin. That's actually a good idea. Take up an obscure climate change story every day and convert that pledge into a proper campaign so that we can disseminate that information, like the Prime Minister says, koti insaan tak pahunchaya jaye. That should be the idea, shouldn't it, Varghese? Well, the idea is there, but one thing that I was also looking into the aspects of it is that when we talk about the environment, I think we are being given a raw deal when it comes to the fact that we are probably that generation of people who moved from the industrial to the electronic industrial revolution that has happened. And that has resulted in a lot of other challenges that are there. Right now, what we are looking at the kind of industrial scale, especially with the electronic industry also involved, there is more need for energy, and also at the same time there is a lot of toxic aspects of our industrial waste that we have to deal with, and that is something that is also causing concern. And that is where the question about changing a lifestyle is also important, and probably even looking at technologies that are much more safer for the environment, especially when it comes to not affecting our day-to-day life or the kind of advancement we've done to reach here, but actually to bring on those technologies as well is something that they are looking at. Remember, we were also talking about, the fact that people were talking about trying to the Mother Nature reclaiming the environment. I mean, that was your nephew also speaking about it. And especially a lot of schools nowadays are trying to inculcate these lifestyle goals when it comes to the issue about how children can be taught a much more better environment-friendly lifestyle. I mean, they've been, in my daughter's school, they've been teaching about how the situation is when it comes to using only paper bags. So she used to come, in fact, they taught her how to make paper bags, and she kept making paper bags at home also. And, she says that whenever I go to outside to buy something or something, she gives me a paper bag and says that you better buy and put in this, don't bring in plastic inside the house. So that's the level at which these schools are also operating. That's awesome. And, yeah, so I mean, that's the kind of lifestyle changes. Yeah, lifestyle changes. And of course, I just realized what is more wholesome is that we've got a Meenakshi Lekhi fan in the comment section saying, good morning Meenakshi Lekhi ma'am, and how are you? I'm Gaurav Chaturvedi from Pune, Maharashtra. Good morning Meenakshi Lekhi ma'am. So Lekhi ji, you've got a fan
in the comment sections already. But you know what you spoke about, it is actually so wholesome that youngsters are now taking up. Even as we've put these green plants in the studio, we make it a point that everything around us is green. I'm wearing a green jacket. Of course, it wasn't planned. And we believe you. But the theme today is certainly going to be green. My life, my India, my life goals. So from my life, my rules, you basically have to shift a little. Have to take it's a small pivot, but it makes all the difference. But my life, my rules. So my India, my life goals. So once you put sustainable development a little ahead of your own life, is when you start talking about it, because you understand we're 140 crore strong, 140 crore people. To how each and one, you'll go and ask what is sustainable development to them, you'll get 140 crore different answers. But the basic foundation of sustainable development is missing. That kind of awareness is missing. And what is going to happen today at our event, where we're felicitating, it's actually a bid. I mean, of course, people will say that it's a big event. It's happening at a big place. There are air conditioners that are going to be used. People are going to be coming in fancy cars. There's going to be a proper high tea after the event. Maybe people will throw their plastic cups here and there. That's not going to happen. We've already spoken about it. We've already thought about it. We'll make sure that none of that happens. That it's important that these kind of events take place so that people outside understand that there is some sort of reward also that you get out of it. There is some sort of respect that you get out of it. People become popular as well. So many environmental activists that have gotten popular just by protesting right next to the Yamuna for the river body be frothing. So many people have made careers out of that, haven't they? You set out to put a stop to something that's wrong, and by the end of the day it becomes your profession. But the idea is that you felicitate these kind of people. These are the actual heroes, the real warriors. Meenakshi Lekhi is going to be there. She also seems to be like the right person to be giving the keynote address. Will of course grace the occasion 100%. And I'm really excited to take a look at some of the panel discussions. More than that, the short movies that they've made. Actually, I'm also each one of the works somebody's cleaning up a done. beach, somebody's working on cleaning up of a drainage system, somebody's making sure that sustainable development remains in the curriculum inside students. Innovative ways of making sure that the youngsters out there, the really youngsters at an impressionable age, you start talking about concepts like planting more trees, sustainable development, various ways of procreating and giving life that is green in color. Okay, that's interesting, because when you spoke about how sustainable, and especially this slogan about catch 'em young. I mean, you catch 'em young with a lot of trying to inculcate good habits, but then this is also a habit where you can actually do it when you catch 'em young. You were in fact talking about that aspect about how to be sustainable. One of the biggest infrastructure projects that has sustainable energy being used completely is the Cochin International Airport, where you have large solar panels being set up, and that has been providing power to that airport. And there's also this attempt to use rainwater harvesting as well. So there is a lot of examples of such architecture that has been used in public spaces as well, and also environment friendly kind of technology that has been used to power these public infrastructure areas as well. But I was reading recently something about how in China they are setting up these huge towers, and what the job of those towers is to clean the air. Instead of trees, they are setting up these towers, because that is the kind of quick fix they had to come up with. And these huge towers, they take in the air inside, and it sends out the air with less of amount of carbon dioxide back into the system, and the air tends to be cleaner. It tends to be this thing. It's literally what the tree does, and it's an experimental basis, but they're doing it in certain places to actually find out whether they can go ahead and make it a sustainable thing. But then again, the catch comes over there. The power used to get this thing done, I mean, or try to run these huge towers to clean up the air, is actually from coal. So the coal driven this power is what they are. Coal rush. The coal rush, yeah, in a way. And so because coal is being burned to get because thermal power stations are which are firing it. So that is the kind of catch you're in. You have to create energy in terms of polluting kind of natural
resource, and then you are trying to clean up that fact. I think that cycle is what a lot of environmentalists are trying to do. In fact, we have the event beginning. Let's cut across live. Absolutely. My India, My Life Goals, the keynote address by Chief Guest Union Minister Meenakshi Lekhi. It's TV9's bid to felicitate the Green Warriors in relation and collaboration with the Cultural Ministry. Let's cut right across to the event. कहते हैं चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। प्रकृति भी हमें अक्सर यही बताती है कि बदलाव जरूरी है, रुकने का नाम जिंदगी नहीं, और चलते रहना भी जरूरी है। लेकिन ये बदलाव हमारी बेहतरी के लिए है या बुरे के लिए, समझना जरूरी है। सोचने की जिम्मेदारी किसकी है, यही बड़ा सवाल है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आज पूरी दुनिया में हम बड़े बदलाव होते हुए देख रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने कई बड़ी उपलब्धियां भी हासिल कर ली हैं, और इसी वजह से हम सबकी लाइफ अब पहले से ज्यादा बेहतर है, कंफर्टेबल है। लेकिन हमारी इसी कंफर्टेबल लाइफ के लिए हम सबका घर यानी अर्थ, हमारी पृथ्वी, एक बड़ी कीमत भी चुका रही है। Our actions are really harming our planet. हीट वेव हो, तूफान हो, मॉनसून की अनसर्टेनिटी हो, या कहें कि बाढ़ की स्थिति या सूखा, क्लाइमेट चेंज का असर दुनिया भर के ज्यादातर देशों में देखने को मिल रहा है, और हमारा इकोसिस्टम बुरी तरीके से कैसे इफेक्ट हो रहा है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। हालांकि कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहूंगी। 1970 से अब तक हमारी वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन 68% यानी 68% तक कम हुई है। एयर, लैंड, वाटर, हम हर नेचुरल रिसोर्स का बुरी तरह से इस्तेमाल कर लगातार और ज्यादा पोल्यूट कर रहे हैं, और यही वजह है कि खतरा बढ़ता जा रहा है। हमने प्लास्टिक का इतना इस्तेमाल किया है कि यूएन के एक अनुमान के मुताबिक साल 2050 तक हमारे समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक दिखेगा, और ये तय है कि अर्थ में हो रहे ऐसे कई बदलाव हमें बेहतरी की ओर नहीं ले जा पा रहे। आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद से ही भारत में अमृतकाल का आगाज हो चुका है, और साल 2047 तक हम पूरी तरह से एक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लेकर आगे भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में क्लाइमेट चेंज को लेकर हमारे फैसलों पर पूरी दुनिया की नजर है। क्लाइमेट चेंज के गंभीर नतीजों को देखते हुए ही पिछले साल भारत सरकार ने मिशन लाइफ अभियान की शुरुआत की, और इसी के जरिए देश के हर नागरिक से पर्यावरण संरक्षण को लेकर अपनी जिम्मेदारी समझने की अपील भी की गई। हालांकि एक और फैक्ट आपके सामने रखना चाहूंगी, क्योंकि वैज्ञानिकों की अगर माने तो इतिहास में पृथ्वी के लिए यह सबसे मुश्किल घड़ी है। इसलिए आज बेहद जरूरी है कि हम पर्यावरण संरक्षण के महत्व को न सिर्फ समझें, बल्कि इसे अपनी डेली लाइफ में भी शामिल करें, अडेप्ट करें। इसलिए आजादी के इस अमृतकाल में लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की जरूरत को समझते हुए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मिलकर TV9 नेटवर्क लेकर आए हैं माई इंडिया माई लाइफ गोल्स कॉन्क्लेव, जहां आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं देश के कई बड़े पॉलिसी मेकर्स, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स, और साथ ही इन्हीं दिग्गजों के साथ ग्लोबल ग्रीन एजेंडा से जुड़े कई खास पहलुओं पर आज हम चर्चा भी करेंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के जरिए हम हमारी प्रकृति का बचाव कैसे कर सकते हैं। जरूरी हम सबके लिए ये समझना कि इस बात को समझ के अपनी जिंदगी में अमल कैसे हम ला सकते हैं, कैसे इसे और बेहतर बना सकते हैं। साथ ही करेंगे उन ग्रीन वॉरियर्स का सम्मान पर्यावरण संरक्षण को लेकर जिनके लाइफ गोल्स हमारे लिए बन चुके हैं मिसाल। तो जोरदार तालियों के साथ आप सभी का आज मैं यहाँ पर स्वागत करना चाहूंगी, और इसी एफर्ट और इनिशिएटिव के तहत हम ये समझना चाहेंगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट के साथ जुड़ते हुए TV9 ये खास कॉन्क्लेव कर रहा है, और कई खास रिप्रेजेंटेटिव आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने वाले हैं। उनके साथ भी होगी खास बातचीत, लेकिन सबसे पहले ये खास थीम सॉन्ग। तो वंदे मातरम की हम शुरुआत करने वाले हैं, और इसी थीम सॉन्ग के लिए मैं सबसे पहले मंच पर इनवाइट करना चाहूंगी। खास बच्चे हैं इस वक्त हमारे साथ हैं, उनको मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी, और आज़ादी के अमृतकाल के दौर में नए भारत का जिस तरीके से जन्म हुआ, वो भारत जिसकी सोच बेहद तेज है, जो दूर की सोचता है और तुरंत फैसले लेने में विश्वास भी रखता है। हमारे सबसे बड़ी खासियत यही है कि हमारी रफ्तार चाहे जितनी तेज हो, हम जमीन से जुड़े रहना चाहते हैं। इसलिए आज जब पूरी दुनिया ने अर्थ को एक हेल्दी प्लैनेट बनाने की राह पकड़ ली है, ऐसे में आज भारत को एक लीडर के रूप में भी देखा जा रहा है, और देश की उपलब्धि हमें गौरवान्वित करती है, जहां हम
इंडिया के प्राइड की बात कर रहे हैं, वहीं माई इंडिया माई लाइफ गोल्स कॉन्क्लेव में हम सबसे पहले आपके सामने एक ऐसी परफॉर्मेंस रखने जा रहे हैं जिसमें देशभक्ति का एक खूबसूरत समा ये खास मेहमान आज इस मंच पर बांधने वाले हैं। इसकी शुरुआत से पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, मंच पर आप देख रहे हैं जेपीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर ब्लाइंड के स्टूडेंट हैं तरुण कुमार, और साथ ही रुपेश चौधरी भी, ये भी एक स्टूडेंट हैं जेपीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर ब्लाइंड लोधी रोड न्यू दिल्ली से, जो इस खास मंच पर आज हमारे साथ हैं। I would please request everyone to please stand up and join them. वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य स्वामिलम मातरम वंदे मातरम शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लक सुमित ध्रुवधर शोभनी सुभासिनी सुमधुर भासिनी सुखदं वरदं मातरं वन्दे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Well, the initiative encourages a lifestyle that focuses on mindful and deliberate utilization of resources and aim to change the present, use and dispose of consumption habits. इसीलिए मैंने कहा कि हम इन बातों को समझते तो जरूर हैं, लेकिन उन्हें अडेप्ट कैसे करना है आज शायद इस मंच के माध्यम से आप भी समझ पाएंगे, क्योंकि जो आइडिया है इस खास कॉन्क्लेव का आज, उसके जरिए मैं ये आपके सबसे पहले सामने बात रखना चाहूंगी। The idea behind is to encourage individual to adapt simple changes in their daily life that can contribute to the climate change. आगे बढ़ रहे हैं हम, और एक खास ये भी आपके सामने यहाँ से। कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं दरख्त सूख रहे हैं, कहीं विशाल पर्वतों की नींव खिसक रही है तो कहीं वनों के भीतर पनप रही है आग की ज्वाला। आज विश्व ग्लोबल वार्मिंग से ग्लोबल बॉइलिंग की तरफ बढ़ रहा है। भारत न सिर्फ ग्लोबल ग्रीन एजेंडा को तय कर रहा है, बल्कि इस एजेंडे का नेतृत्व भी कर रहा है। ये एक शब्द है लाइफ, LIFE, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। प्रधानमंत्री जी के ये शब्द हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने, और इसी तर्ज पर आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत TV9 नेटवर्क ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे से एक साझा अभियान की शुरुआत की, माई इंडिया माई लाइफ गोल्स। भारतीय संविधान के 11 फंडामेंटल ड्यूटीज में से एक पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा करना हमारा मौलिक ही नहीं बल्कि संवैधानिक कर्तव्य भी है। इसलिए जरूरी है कि हम इसे अपना लाइफ गोल बनाएं और पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। 9 ग्रीन वॉरियर्स जिन्होंने अपना जीवन, अपनी महत्वाकांक्षाएं सब प्रकृति के नाम कर दी और 140 करोड़ भारतीयों के लिए प्रेरणा बने। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इन ग्रीन वॉरियर्स की कर्तव्य निष्ठा ने देशवासियों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। डिजिटल दुनिया में #MyIndiaMyLifeGoals को हमने एक ट्रेंड बनाया, जहां एक तरफ हम घर घर तक पहुंचे और पर्यावरण को बचाने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव के सुझाव दिए, पर्यावरण को आपकी जरूरत है और कुछ काम करना चाहिए। तो दूसरी तरफ
स्कूल और कॉलेज में युवाओं के साथ मिलकर वृक्षारोपण भी किए। तो आइए हम सब मिलकर आजादी के 75 साल मनाते हुए ये प्रण लें कि अपने पर्यावरण, अपनी धरती माँ को सदा हरा भरा रखेंगे और आने वाली पीढ़ियों को एक खुशहाल पर्यावरण की सौगात देंगे। माय इंडिया माय लाइफ गोल्स कॉन्क्लेव करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसका मकसद क्या है, ये इस एबी के जरिए तो आपको भी समझ आ गया होगा। लेकिन किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरत होती है वॉरियर्स की, और लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के लाइफ गोल को हासिल करने के लिए देश को कुछ खास ग्रीन वॉरियर्स का साथ भी मिल रहा है। सस्टेनेबल लाइफ को लेकर इन्होंने जो लाइफ गोल सेट किए हैं वो आज पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। हमारे बीच देश के ऐसे ही कुछ खास ग्रीन वॉरियर्स भी मौजूद हैं और इन्हीं वॉरियर्स को अब मैं मंच पर भी बुलाना चाहूंगी, जहां सबसे पहले आपको बता दूं मंच पर हमें ज्वाइन करेंगे काना राम। लेकिन इन्हें हम क्यों ग्रीन वॉरियर कह रहे हैं, देखिए। प्लास्टिक इस धरती का दुश्मन है जिसको हमने अपने घर में पाल रखा है। नमस्कार आप सबका, मेरा नाम कानाराम मेवाड़ा है और लोग मुझे कांजी चाय वाले के नाम से जानते हैं। आज हमारी दुनिया में, हमारे भारत में बहुत बड़े बड़े प्लास्टिक के पहाड़ बनते जा रहे हैं, जहाँ तक कि बड़ी गवर्नमेंट भी कुछ कर रही है, नगर पालिका भी साफ सफाई का लिए कर रही है, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। प्लास्टिक को लेके मैंने ये शुरुआत की कि सबसे पहले जैसे कि सिंगल यूज प्लास्टिक, आपके घर से निकलने वाला चिप्स, दूध का थैली, कैरी बैग या कप, किसी भी प्रकार का जो भी पाउच होता है, रेफर या पानी का बोतल या तेल का पाउच, उनको हमने डोर टू डोर कलेक्शन शुरू किया। प्लास्टिक लाइए, मैं हर मंथली कभी स्कीम चेंज करता हूँ जिसमें मैं कभी 1 किलो वेस्ट प्लास्टिक ला के दीजिए और आप आकर्षक इनाम पाइए। हर महीने मेरे पास 200 किलो से ज़्यादा प्लास्टिक आता है और इसका वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लोग मुझे लाके दे रहे हैं और मैं मेरे हिसाब से क्लीन अप प्रोग्राम भी करता हूँ। लोग एनवायरनमेंट को समझते, बाहर नहीं फेंकते। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और अपने देश को आज़ाद होकर 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसमें कि आइए हम सब इस मुहिम में आगे बढ़ाएं और अपने देश को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। प्लास्टिक फ्री का संकल्प जिन काना राम मेवाड़ा ने लिया है, राजस्थान के ये रहने वाले हैं लेकिन आज हमारे बीच मौजूद हैं और मैं चाहूंगी एक बार फिर से तालियों के साथ आप इनका मंच पर स्वागत करिए। आइए। ऐसे और भी ग्रीन वॉरियर्स हैं, उनमें इसी फहरिस्त में एक नाम है राजेश शुक्ला का। उन्हें हम ग्रीन वॉरियर क्यों कह रहे हैं, जरा देखिए। सुबह भोर में प्रातःकाल 5 बजे जब मैं अपने स्कूटर को निकालता हूं तो श्रमदान करके गंगा की तलहटी, गंगा के किनारों पर जो गंदगी है उसको सहेजते हैं, संभालते हैं और उसको कूड़ेदान तक पहुंचाने में मदद करते हैं। पूरी टीम के साथ रोजाना 3 घंटा माँ गंगा के तट पर आकर माँ गंगा की आरती उतारना और लोगों को गंदगी न करने के लिए जागरूक करना, ये हमारी नियमित की दिनचर्या में शामिल है। आप सभी श्रद्धालुओं से यह निवेदन है कि गंगा किनारे किसी भी प्रकार की कोई गंदगी न करें। लोगों को बताया कि गंगा तट पर ये जो पॉलिथीन है, ये कपड़े हैं, ये सामग्रियां हैं जो गंगा के लिए हानिकारक हैं, उनको ऐसा न करें, ऐसा गंगा में विसर्जित न करें। हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। यह अमृत महोत्सव आज हमको सीख देता है कि हम संगठित होकर अपने पर्यावरण के लिए लड़ें और जब हम मिलकर यह साथ करेंगे, हमारा पर्यावरण अच्छा होगा तो हमारा भारतवर्ष भी आरोग्य भारत की ओर बढ़ता जाएगा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो गंगा से गंदगी को दूर रखने का बीड़ा उठाया है राजेश शुक्ला ने, जो इस वक्त हमारे साथ है। मैं चाहूंगी आप भी हमें मंच पर ज्वाइन करें। ओके, तो ट्री मैन युवा साथी भी एक हमारे साथ हैं। इन्हें हम ग्रीन वॉरियर क्यों कह रहे हैं, जरा देखिए। 2011 में मैं चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुआ और वहाँ की हरियाली को देखा, इतना हरा भरा शहर को देखा और उसी समय मेरे भी मन में बीजारोपण हुआ। इस मातृभूमि के लिए, प्रकृति माँ के लिए कुछ करना चाहता हूँ।
जब पौधारोपण की शुरुआत की, युवाओं को जोड़ा, उसके बाद हर वर्ष 20-25 हजार पेड़ हम गांव में लगाते हैं और गांव वासियों को जोड़ते हैं। फिर 2020 में विश्व में कोरोना महामारी आई और उसको देखते हुए हमारे मन में ये विचार आया, अब गांव-गांव ऑक्सीजन बाग लगाए जाएं, इस तरह के हजारों भारतीय प्रजाति के पेड़ हों जो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं, जो हजारों पक्षियों का आश्रय बनते हैं, और गांव वालों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये जन आंदोलन बना। पेड़ लगाना मेरा कर्तव्य ही नहीं, ये हम सब का कर्तव्य है। पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। स्वागत करना चाहूंगी मैं आपका मंच पर। हमारे साथ ये ग्रीन वॉरियर हैं और इनका संकल्प जानते हैं क्या है? इनका संकल्प है ऑक्सीजन बाग लगाने का। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए कैसी मेहनत करनी पड़ रही है। आज मैं चाहूंगी मंच पर इन्हीं के साथ में अब कुछ ही क्षणों में चर्चा की शुरुआत करने वाली हूं। इनका स्वागत तो हो ही रहा है, लेकिन मंच पर चर्चा से पहले मैं चाहूंगी आप प्लीज स्टेज को सेटअप कर दीजिए। और इस बीच जिस तरीके से इस खास इनिशिएटिव के तहत आज हम हमारे साथ जुड़े हैं, आजादी का ये अमृत महोत्सव है। प्रगतिशील भारत के 75 साल पूरे होने के मौके पर लोग संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को तो हमेशा याद करते ही हैं। जश्न मनाने के लिए जिस तरीके से भारत सरकार की ओर से कई पहल की गई हैं, उसमें आम लोग किस तरीके से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, और उसी सोच के साथ ये 3 ग्रीन वॉरियर्स हमारे साथ हैं। किस सोच के साथ इन्होंने ये शुरुआत करी, किस लक्ष्य के साथ ये आगे बढ़ते गए, और किस तरीके से इनके छोटे छोटे प्रयासों का ही नतीजा है कि आज हम इन्हें ग्रीन वॉरियर्स कह रहे हैं, इसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। साथ ही क्योंकि अब 15 अगस्त बहुत नजदीक है, हर घर तिरंगा की हम हर जगह चर्चा सुन रहे हैं। बता दें, देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद से ही हम सभी आजादी का अमृत महोत्सव तो मना ही रहे हैं, लेकिन पिछले साल जिस तरीके से हमने अमृत महोत्सव में बड़े ही भव्य रूप से जश्न मनाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश के हर घर में तिरंगा लहराता भी दिखा। और इस बार भी देश की 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम सभी एक बार फिर से देश की आन बान और शान को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार फिर से हम सभी को हर घर तिरंगा फहराना है, उन ऐतिहासिक पलों को एक बार फिर से दोहराना है, एक बार फिर से हर घर तिरंगा फहराता हुआ देखने का बस पल आ ही गया है। लेकिन अब वो पल भी हमारे सामने है जब इन्हीं ग्रीन वॉरियर्स के साथ हम अब चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं। और मैं चाहूंगी कि इन मंच पर तो आप हमारे साथ हैं, आप कुर्सियों पर भी हमारे को ज्वाइन करिए, क्योंकि राजस्थान, वाराणसी और चंडीगढ़ के ये रहने वाले हैं, लेकिन हरियाणा में रहते हैं, ट्री मैन कहलाए जाते हैं। किस तरीके का ये योगदान बातचीत की मैं शुरुआत करने वाली हूं, और छोटे से प्रयास किस तरीके से बड़े मुकाम तक हमें पहुंचाते हैं, उसी के तहत सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहती हूं। कानाराम जी, राजस्थान के आप रहने वाले हैं, लेकिन राजस्थान को जिस तरीके से प्लास्टिक फ्री बनाने का आपने संकल्प लिया है, क्या सोच है इसके पीछे, कैसे आपने इसकी शुरुआत की? हेलो जी, ये मैंने शुरुआत की है। मैं पहले एक बड़ी ग्रुप में एक वेटर था। वेटर के बाद मैंने एक चाय की दुकान शुरू की, जिसमें मेरे बड़े भाई साहब दिलीप जी जैन हैं, वो मुंबई रहते। तो उन्होंने मुझे इस काम के मोटिवेट किया कि हमारा ये जवाई क्षेत्र बहुत बड़ा है, जवाई डैम है, जहाँ पे बहुत बाहर से लोग घूमने के लिए आते हैं। बहुत बड़ा जंगल है, जहाँ पे लेपर्ड के नाम से बहुत फेमस एरिया है। तो इस जंगल को बचाने की मुहिम से हमने एक लोगों को प्रेरित किया, जागरूक किया कि आप ये इतने दूर से घूमने के लिए आए, इतनी अच्छी जगह है, नेचर को बचाने के लिए, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए आप इस जंगल के लिए कुछ कीजिए। उन्होंने मुझे सहयोग किया। तो उसी सहयोग के साथ मैंने एक प्लास्टिक की नई शुरुआत की, जिसमें मैं भी, मेरे घर से भी निकलने वाले प्लास्टिक से मैं खुद भी बहुत परेशान था। दुकान से निकलने वाला लोग आके थे, आधा फेंक देते थे, आधा जलाते थे,
आधा नदी नालियों में जाता था, जो बीमारियों का रूप होता था, या कुछ जानवर खाते थे तो वो जानवर का किसी को, अपने भारत में गायों को भी बहुत पूजन होती है, लेकिन मानना ये कि गाय खा रही है लेकिन उसका दूध किसके पेट में जा रहा है वो नहीं पता, जा रहा तो अपने इंसान और मानव के शरीर में ही है। तो उसी की शुरुआत को लेके मैंने ये एक नई पहल की कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो भी घर से निकलने वाला होता है उसको एक तरीके से लोगों से मैंने घर घर जाके बोला कि आप आपके घर का प्लास्टिक इकट्ठा कीजिए, मैं आपको कुछ सहयोग करता हूँ, मैं आपको कुछ प्लांट देता हूँ। लोग नहीं समझ रहे थे, फ्री ऑफ कॉस्ट में देना नहीं शुरू किया। गाँव के लोग हैं, उनको थोड़ा पर्यावरण और नेचर के बीच समझाना बहुत डिफ़िकल्ट रहा मेरे लिए। तो मैंने एक आइडिया लगाया कि इनको इनके बदले में कुछ देना शुरू करूँ। तो मैंने गांव की महिलाओं को, जब एक हमारी चौपाल होती है वहाँ जाके गली मोहल्ले में जाके इकट्ठा किया और उनको समझाया कि आपके घर से जो भी आपका कचरा निकलता है प्लास्टिक, वो आपके घर को स्वच्छ सुंदर रख के आप बाहर फेंकते हो, आप बाहर मत फेंकिए, मुझे ला के दीजिए, आप 1 किलो ला के दीजिए, उसके बदले में आप 1 किलो चीनी लेके जाइए। तो ये चीनी वाला फॉर्मूला मेरा काम कर गया और इसी चीनी के फॉर्मूले के आधार पर मैंने ये एक नई मुहिम शुरू हो गई और लोग, गांव की महिलाएं जो मुझे चीनी के रूप में जैसे प्लास्टिक घर से लाना देना शुरू किया, उसी के साथ मैंने अपने गांव के युवाओं को भी जोड़ा, गांव के लोगों को भी जोड़ा, जो प्लांटेशन में बहुत ही अच्छा सहयोग मिला। जैसे कि आप भी 1 किलो प्लास्टिक लाइए और एक प्लांटेशन पाइए। और उसी के साथ नई शुरुआत की मैंने गांव के स्कूली बच्चों को, जो बच्चों को बोला कि आप आपके पेरेंट्स को, मदर फादर सबको बोले, आप अब कुछ भी यूज करते हो, चिप्स, कुरकुरा, नमकीन या जैसे भी कुछ भी प्लास्टिक की पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक, वो आप बाहर नहीं फेंके, उसको आप मेरे पास लाके दीजिए, जिससे मैं आपको आपकी ज़रूरत का सामान दूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम, क्योंकि ये कहना बहुत आसान है कि किसी को अपने साथ मकसद में जोड़ सकते हैं, लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो एफर्ट और इनिशिएटिव लेने की कोशिश की है इन्होंने, वो वाकई बहुत सराहनीय है। अब मैं राजेश शुक्ला जी आपसे जानना चाहती हूँ, गंगा को स्वच्छ रखने के लिए आपके इस समर्पण की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि डिस्पोज ऑफ करना, डिस्कार्ड करना हम सबके लिए बहुत आसान होता है, लेकिन वो कहाँ, किस स्तर तक जाकर किसको कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, ये समझना बहुत मुश्किल। सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित जनों को नमस्कार करता हूँ। काशी जो माँ गंगा की नगरी है और 84 घाट हैं, माँ गंगा हमारी काशी नगरी में उत्तर वाहिनी स्वरूप में विराजमान है और सदियों से गंगा हम भारतवासियों को अपने आंचल तले पाल पोष रही हैं। और हमारी काशी में जो हमारी आध्यात्मिक शुरुआत होती है वो माँ गंगा के जल से ही होती है। और ये कहना और अतिशयोक्ति होगा कि हमारे धार्मिक, पूरे भारतवर्ष हो या कहीं भी अब्रॉड हो, हम कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, आज जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे प्रसंग हम अपनी गंगा मैया के जल से संपादित करते हैं। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि माँ गंगा की सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और गंगा मैया का यह कार्य पिछले 9 वर्षों से जब मैंने प्रारंभ किया, वाराणसी के गंगा किनारे ही हमारा निवास भी है, गंगा घाट के पास है, और हम देखते हैं कि गंगा मैया का जल जब हमारे इतने काम आता है, सारे काम, कोई धार्मिक प्रयोजन हो, तीर्थाटन हो, पेयजल हो, सिंचाई हो, सब कार्यों में हमारी माँ गंगा का जल हमारे काम आता है। और उस गंगा मैया में भी लोग जाकर गंदगी भी करने में नहीं सकुचाते हैं। पॉलिथीन में भरकर पुरानी जो पूजन सामग्रियां हैं, कई कई महीने हम घर में रखे रहते हैं, पॉलिथीन में भरते हैं, झोले में भरते हैं और पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए गंगा में प्रवाहित करने में जरा सा भी सकुचाते नहीं हैं। इस मुहिम की शुरुआत करते हुए जब 9 वर्ष पूर्व हमने गंगा घाटों पर विचरण करते हुए देखा कि लोग गंगा में साबुन शैम्पू लगाकर स्नान भी कर रहे हैं, लोग अपना भी कपड़ा धो रहे हैं, अपने तन में भी साबुन लगा रहे हैं और अपने सैकड़ों लोगों के कपड़े लाकर भी धो रहे हैं गंगा किनारे, और वहीं बगल से 1 लोटा गंगा जल ले जाकर हम भोलेनाथ को भी, श्री काशी विश्वनाथ जी को चढ़ा रहे हैं। और हमारी काशी नगरी में जितने भी विग्रह हैं सबका स्नान भी उसी गंगा जल से हम कराते हैं। कितना काम आता है हमारा ये गंगा जल। उस समय हमने एक संकल्प लिया, वाराणसी में एक अभियान चलाया, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं और हमने उनको 80 घाट पर स्वयं अपने हाथों से गंगा माँ के किनारे सफाई करते हुए और उनको डोलची में और डलिया में रखकर कूड़ेदान तक पहुँचाने
हुए हमने देखा है, हमने सामने ये अनुभव किया कि जब देश के हमारे प्रधानमंत्री वह कार्य कर सकते हैं जो कि एक स्वच्छता का आंदोलन बने, उस दिन से यह संकल्प लिया और वाराणसी के 84 घाटों पर रोजाना प्रतिदिन कोई भी दिन ऐसा नहीं बीतता जब हम गंगा किनारे नहीं जाते हों। आज कभी नमो घाट जा रहे हैं, कभी 80 घाट जाते हैं, कभी राजघाट जाते हैं, कभी केदार घाट जाते हैं, कभी मणिकर्णिका घाट जाते हैं। ये सारे हमारी काशी के अभूतपूर्व अविस्मरणीय घाट हैं। इन घाटों पर जाकर गंगा की तलहटी की सफाई करना, अंदर गंगा के अंदर उतरना, गंगा के तल से पॉलिथीन, कपड़े, हमने देखा है कि साड़ियाँ, चुनरियाँ, कई प्रकार के कपड़े गंगा में विसर्जित करते हैं और दूर दूर से बह के आते हैं। उससे हमारी गंगा मैया का जो अंदर का जो जल है वो काफ़ी गंदा मैला हो जाता है। उसको हमने इतना हमें तो लगता है कि 2-3 ट्रक हमने आज तक पूरा अगर शामिल किया जाए तो इतने कपड़े उसमें से हमने निकाल दिए अंदर से सफाई करते हुए। तो वो गंगा के अंदर से डुबकी मार करके अंदर से निकालना, और हमारे साथ एक ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउड स्पीकर होता है, निकाल करके घाटों घाटों पर लोगों को समझाना कि भैया ऐसा क्यों करते हैं, ये कपड़े, ये पॉलिथीन में भरकर सामग्रियां। और हमने तो 1-1 फुट की शीशे की तस्वीर, ईश्वर की तस्वीर घर में खराब हो गई जी, भगवान की तस्वीर है पुरानी हो गई, लोग समूचा शीशा सहित हमारी इस माता की तरह हितकारी नदियों में समर्पित कर देते हैं। उस शीशा लगा हुआ तस्वीरों को निकाला। तो ये सारी चीज़ें निकाल करके लोगों को जागरूक किया। और हमारे साथ एक आरती का पात्र होता है हमारा अपना, हम गंगा आरती भी करते हैं सबके साथ। तो ये मुहिम चलाई। तो आज मुझे लगता है कि 9 वर्षों से गंदगी को दूर रखने के लिए आपने अपने इस संकल्प को जिस सरल शब्दों में बताया है, मुझे लगता है उसके लिए संयम बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बढ़ता ही जा रहा है और उसी के तहत आप समर्पित हैं, ये जानते हुए कि एक लक्ष्य के साथ आप इसे कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त देवेंद्र हैं, इन्हें ट्री मैन कहा जाता है। ये अकेले मंच पर यहाँ जरूर हैं, लेकिन ये एक मजबूत पेड़ है और इनके साथ है 10,000 से ज्यादा लोगों की टीम। ये छोटी बात नहीं है। 1.5 लाख पौधे ये अभी तक लगा चुके हैं, 500 से ज्यादा गांव तक ऐसा अभी तक ये मुकाम हासिल कर चुके हैं। गलत तो नहीं कह रही? अब ये सोच, उस सोच को अमल में लाने के लिए कैसे आपने ये कोशिश करी? आप मजबूत हैं, इसीलिए आज आपके साथ 10,000 लोगों की टीम है। पहले तो मैं TV9 भारतवर्ष का धन्यवाद करता हूँ, इतने बड़े मंच पर आके और इस तरह का पहली बार आने का अनुभव हुआ और थोड़ा हिचक भी होता है। लेकिन मैं एक खिलाड़ी था और देश के लिए यही होता है खिलाड़ी का, भाई नेशनल खेले, एशियाड खेले, अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेले। मैं 2011 में चंडीगढ़ पुलिस में भर्ती हुआ और मेरे मन में ये हुआ भाई नौकरी तो लग गया। जो मन में एक भभक थी, हाँ तू कुछ कर सकता था गेम के माध्यम से, तो ये कुछ कर सकता है। तो मन में आया क्या करें, इस राष्ट्र के लिए भाई भाव था, क्या करें। कोई भी कार्य करने से पहले व्यक्ति के मन में भाव जरूरी है। तो वहाँ की हरियाली को देखा, पता करा ये पेड़ कैसे लगे, पता चला ये वहाँ के फ्रांस के एक ली कार्बुजियर थे जो नक्शा बनाया। और जब मैंने देखा प्लान से एक शहर हरा भरा हो सकता है, तो क्यों ना पूरे भारत के गांव भी हरे भरे हो सकते हैं। और मैं पेड़ लगाने मैंने शुरू किए, गांव गांव गया, युवाओं को जोड़ा। ऐसा लगता था शुरू में मैंने ये कार्य शुरू किया, लेकिन आज जो आनंद आता है उस कार्य को करने के लिए, अब युवा जुड़ते चले गए, गांव के लोग जुड़ते चले गए और थोड़ा दबाव भी रहा रिश्तेदारों का, भाईचारे का, ये कार्य आपका नहीं है, ये माली का कार्य है, या इस तरह का मतलब होता है समाज में ऐसा। लेकिन जब एक निश्चय है कुछ इस राष्ट्र के लिए, इस धरती माँ के लिए कुछ मन में भाव है, समर्पित भाव है, निस्वार्थ भाव है, कोई कुछ भी कहे, बस आपने चलना है। आप में जो ऊर्जा है जो अंदर से मिलती है
तो चलते चलते बड़ा दबाव रहा, आप भी गाड़ी लो, आप भी प्लॉट लो, परिवार का भी, रिश्तेदारों का भी, लेकिन कुछ एक ऊर्जा आती है इस देश के लिए, इस भूमि के लिए करने की। गांव गांव गया, गांव गांव युवाओं को जोड़ा। देखो आज पंजाब में मुहिम चल रही है बेटा बचाओ, क्योंकि नशा इतने बड़े स्तर पर है। लेकिन जब मैं बड़ा ही गर्व महसूस करता हूं जब हमने इस तरह युवाओं को जोड़ा, जो आज एक अच्छे नशे से दूर रहते हैं, इस राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं। और लगातार मैं जब गांव में गया, 80-80 साल की हमारी माताएं भी जुड़ी, 5-5 साल की हमारी बेटियां भी जुड़ी, जो हर साल पौधारोपण करती है। तो धीरे धीरे गांव गांव घूमा, युवा जुड़ते चले गए। और उसके बाद कोरोना जैसी महामारी आई, हाँ, पूरे विश्व में, जिसने पूरे विश्व को हिला दिया। हाँ, प्रकृति भी कोई चीज है, मनुष्य भी इसका कोई हिस्सा है, नहीं तो मनुष्य भूल गया था हम प्रकृति का हिस्सा है। लेकिन जब उसने देखा भाई आसमान साफ है और अलग अलग तरह के पक्षी भी दोबारा आ गए हैं, लुप्त होती प्रजातियां आ गई हैं, तो उसके बाद मन में आया कुछ ऐसा किया जाए। उत्तर भारत में, मैं हरियाणा में बोलता हूं, बनी होती थी, फॉरेस्ट लैंड होती थी हर गांव में। गांव उसी को बोला जाता है जिसमें गांव वासियों के साथ वहां के तालाब हों, वहां के जो मुख्य जीव जंतु हों, एक फॉरेस्ट लैंड हो, उसी को मिला के गांव बोला जाता है। ये नहीं गांव में व्यक्ति रहते हैं, सभी पशुधन जीव जंतु सभी पक्षियों को मिला के गांव बनता है। ऐसा वातावरण, तभी उसका नाम गांव दिया गया है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। कोरोना के बाद के हालात ही एक सबसे बड़ी वजह रही कि आप इसे ऑक्सीजन बाग कहते हैं। शुरुआत आपने करी, सहयोग आपको मिला, ऐसे में आर्थिक मदद। देखो, जैसे मन में जब भाव कुछ करने का हो, शुरू में मैंने बताया जैसे भाई दबाव रहा, अकाप पैसा। राजीव जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है। सहयोग शुरुआत समझ आती है, लेकिन उसमें आर्थिक मदद भी तो जरूरत होती है उसे अमल में लाने के लिए। एक्चुअली आर्थिक रूप से तो जब आपको संसाधन मिलते हैं तो ज़रूर आपके साथ जब लोग जुड़ते हैं तो ज़रूर आर्थिक तो मदद मिलनी चाहिए भी। लेकिन आज तक पिछले 9 वर्षों में हम तो अपने स्वयं के तन मन धन से ये कार्य करते आ रहे हैं। जी, आपने क्या ऐसी सिचुएशन फेस करी है जहां आपको लगा कि लोग तो जुड़ रहे हैं लेकिन और आगे बढ़ने के लिए आर्थिक मदद की भी ज़रूरत है? जी, आर्थिक मदद की मुझे ज़रूरत बहुत लगी। दिलीप जी ने तो मुझे सहयोग किया, लेकिन वापस जो गांव के हमारे बड़े बड़े भामाशाह हैं, तो उनको मैंने मोटिवेट किया कि आपके घर में आज आपका जन्मदिन है, बच्चे का जन्मदिन है, आज आप ही उसी जन्मदिन के जो भी खर्चा होता है उसी के लिए आप अपने बच्चों के लिए या गाँव के बच्चों के लिए प्लास्टिक की मुहिम चल रही है, उसमें भी आप कुछ सहयोग कीजिए। तो बड़े बड़े बामा को सहयोग से आज उनकी तरफ से कुछ बुक हो गए, कुछ पेंसिल हो गए, कुछ प्लांटेशन हो गए, चीनी हो गई, तो उन सब के सहयोग से मैंने ये मुहिम को और आगे बढ़ाना शुरू किया, पीछे नहीं हटा। और आज हर महीने से ज़्यादा 500 किलो भी प्लास्टिक आता है और बहुत ही अच्छी नई एक पहल शुरू हो गई है। गांव वाले भी बोलते हैं कि आज हमारे गांव में एक स्वच्छ और सुंदर और जंगल को बचाने की नई मुहिम चल रही है। इन तीनों को सुनने के बाद ये कहना बिल्कुल सही होगा, छोटे प्रयास पर बड़े काम। बहुत अच्छा लगा। जी बताइए। जोड़ना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। मैंने एमकॉम के बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट किया और एक प्राइवेट कंपनी में, तो अपनी एक सैलरी का छोटा सा हिस्सा इस पर्यावरण संरक्षण के लिए पर मंथ ये जो खर्चे आते हैं आरती करता हूँ रोज, तो उसमें कपूर है, अगरबत्ती है, जो भी बत्ती है या जो डलिया है हमको उठाने के लिए चाहिए, ये सारी चीज़ें वो अपने पास से ही हम अपनी सैलरी में से एक हिस्सा उसमें खर्च करते हैं। और उसमें बड़ा हमें लगता है इन लोगों को भी बड़ा एक सुकून मिलता है कि हम अपने भारत राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं और हमसे जुड़कर लोग जागरूक हो रहे हैं। बिल्कुल, प्रकृति को कम नुकसान पहुंचाने और उससे जुड़ने की इस कोशिश के तहत आप तीनों ने जो प्रयास किया है उसमें जिस तरीके से आप सफल हो रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे साथ यहाँ इस मंच पर जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। राउंड ऑफ अप्लॉज। धन्यवाद।
चलिए, आजादी के अमृत महोत्सव में जिस तरीके से हम सभी का योगदान बहुत जरूरी है, उसमें इन ग्रीन वॉरियर्स को सुनते हुए भी एक अच्छी सीख हमें मिली है यहाँ पर। लेकिन क्योंकि हम आजादी के अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं, तो भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक और आर्थिक पहचान को प्रगति की ओर ले जाने के लिए जिस तरीके से ये प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें आजादी का अमृत महोत्सव ही एक खास पल है, जब आप और हम इसके जरिए जुड़ते हुए इन्हीं उपलब्धियों के बारे में जानते हैं और सीख लेने की भी कोशिश करते हैं। हालांकि 15 अगस्त जिस तरीके से नजदीक है, हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं। आजादी का ये अमृत महोत्सव है, उसका उद्देश्य जिन अलग अलग अभियानों के तहत यहां पर चल रहा है, आज यही एक खास मौका है जब इस इनिशिएटिव के जरिए मैं ये कह सकती हूं, माय इंडिया माय लाइफ गोल्स कॉन्क्लेव के जरिए हमें एक बड़ी सीख मिल रही है, क्योंकि ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो हमें इनकरेज कर रहा है अपने लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव लाने के लिए। एंड टू go ahead further with this, I would like to add on, the initiative encourages a lifestyle that focuses on mindful and deliberate utilization of resources and aim to change the present use and dispose of consumption habits. चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे। भारत ने हमेशा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के इनोवेटिव सॉल्यूशंस देकर दुनिया को इंस्पायर तो जरूर किया है। सस्टेनेबिलिटी का पार्ट तो हमने पुराणों से ही सीखा है, और ये तो हमेशा से हमारे ट्रेडिशन या कल्चर का ही हिस्सा रहे हैं। आज हम सोलर और विंड एनर्जी में ग्लोबल लीडर के तौर पर भी उभर रहे हैं। हालांकि कुछ और फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहूंगी, क्योंकि साल 2021 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी ग्लासगो में हुए COP26 कॉन्फ्रेंस के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2070 तक नेट जीरो एमिशन हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, और इसी कड़ी में इंडियन रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य भी रखा है, और इसी के साथ हमने सबसे पहले एलईडी बल्ब्स को बढ़ावा देने का अभियान चलाया है। हालांकि इससे भी सालाना 4 करोड़ टन एमिशन लगातार कम जरूर हो रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन से डिकार्बनाइजेशन और अर्थ को सस्टेनेबल प्लैनेट बनाने के लिए भारत जिस तरीके से तेजी से आगे बढ़ रहा है, भारत सरकार ने फ्रांस के साथ मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत भी की है। अभी भी हमारे लक्ष्य हैं, और ये लक्ष्य थोड़े दूर जरूर है, लेकिन आज अपनी इसी ज्यादातर ऊर्जा जरूरत को पूरा करने के लिए थर्मल पावर पर भी हम निर्भर हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में ऊर्जा जरूरत लगातार बढ़ जरूर रही है, लेकिन सिर्फ ग्रीन एनर्जी से इसे पूरा करना एक बड़ी चुनौती बन चुका है। इस बड़े निवेश का मुद्दा भी बहुत अहम हो जाता है। एक और कई ऐसी जरूरी बातें हैं जिसको समझना हमारे लिए आज के वक्त में बहुत जरूरी है, और उसी के तहत अगले पैनल डिस्कशन की हम शुरुआत करने वाले हैं, जहां इंडिया सेटिंग द ग्लोबल ग्रीन एजेंडा में इस पैनल को मॉडरेट करने वाले हैं, और उसी के लिए मंच पर मैं बुलाना चाहूंगी हमारे सहयोगी कार्तिकेय शर्मा को। Over to you, Karthikeya. Thank you so much, Surbi. Thank you. I take this opportunity not only to talk about how India is doing in terms of meeting climate change agenda, setting the order for a global green world. But I think we live in a world which is at precipice, and I don't want to make people sweat because it's already humid outside. But the fact of the matter is that if you look at the newspapers, you'll understand that climate change is a reality. It's not something which you used to watch in films 5 years ago. It's not something which would happen in the next 50 years. It's not something which will not touch our lives. It is something which will impact both rich and poor equally. And for this, the initiative taken by our Prime Minister Narendra Modi is important. Prime Minister of India, Narendra Modi ji, has set a target, 2070, zero carbon emission, non-fossil fuel energy to 500 gigawatt. Now, the question is, can that be delivered? Can those statistics turn into reality? Can we increase renewables in our system, connect our discoms with solar and wind? We have done well. It's not as if we have not done well. You'd be surprised to know, and if my memory serves me right, 16% of our energy requirement is also drawn from solar, and I think 11 from the wind.
So we are doing well. Unlike the French, which draw 50% of the power consumption from the nuclear energy, India is making great strides under Prime Minister Modi's vision today. So on this August occasion and our My India, My Life goals, I'm very happy to invite two distinguished personalities on stage. One, a pioneer in fashion, doesn't need an introduction. Rituberi ji, please, I invite you to come on the stage. Who has worked on sustainability, khadi, ethnic wear, and Rashmi sir. He has a long introduction, but I think it's important for you to know that he has served in various capacities. He is a distinguished fellow and program director, Earth Sciences and Climate Change, TERI, former chairman, UPSC, and former secretary, MNRE. He has worn many hats. So, sir, my first question to you is, you can take the mic. You can also check whether, okay. My first question to you is, there is an agenda we have. There's a climate change which is facing us. It's going to change the lives of the poor people. But there are technological interventions, there are targets, there are disruptive technologies we have in our front of us like lithium, hydrogen, solar, wind. So first thing is, how are we setting the global agenda in G20 and by Prime Minister shepherding the global South? Thank you very much. You said that climate change is upon us, so it's a huge global problem. But there are two aspects of this problem. One is the source of climate change, the reason why climate change is happening. That's, all of us know, it lies in the way we use energy, primarily the fossil fuels. And the second is the impacts of climate change, how it affects us. You know, and it's not the rich people who get affected by climate change much. It is the poor people, people who live on the margins of the society, who are vulnerable to climate change. You know, there are natural threats of all kinds: floods, extreme weather events, huge precipitation, prolonged droughts, things like that. But it is the people whose means of living is low. They are the ones who get affected by this. India is a country which has been affected by climate for thousands of years, and it is known as not climate change, it's known as climate variability. You know, the variation in the climate, you can see we have long summers, we have long winters, we have long rainy season. It is not a usual weather which developed countries have. People in the US, people in Europe are not used to this kind of weather, variability in the weather. So their climate has always remained stable generally. For them, climate change is a huge new monster. So that is why they talk so much about climate change. But in our country, we have always been exposed to high degree of climate variability. But what is now going to worry us is that these impacts which we face today are going to get accentuated more and more. So that is what the G20 is now going to take up this issue in two fashions. Which are with the vision of the Prime Minister. He has said life, you know, lifestyle for environment. We need to change our lifestyle. If we don't change, we will not be able to modify the way we use energy. And energy drives everything, you know, in all our lives. Energy is the primary driver of higher standard of living all across the world. So the way we use our energy has to change. And that is what one of the primary agendas of G20. We have to make a transition from fossil fuel based energy system to renewable energy based system. And the second is to build the capacity of countries or the vulnerable communities to withstand this impacts of the climate change. Isn't it so unfair if we look at our per household energy consumption? I think it's 1/10 of an American household. And in context of individual expenditure of carbon, I think we are the lowest, and the burden comes on global South, countries like us. And if you look at the West, they have made the best of the technologies, but they do not want to take the responsibility of it. That's very true. In fact, if you look at the statistics, and only carbon is not the only natural resource that we consume.
Carbon is one of the natural resources that we consume, but we consume water, we consume air, we consume land, everything. The entire ecosystem gets affected by the way we live. So, but carbon becomes prominent because carbon causes climate change. So, so what is happening is that our average consumption of carbon is one of the amongst the lowest in the world. It's just about 1.6 per tons of CO2 in our country, whereas every average American emits almost 16 tons per capita, 16 tons. So they're almost 8 or 10 times more energy that they consume, and energy from fossil fuels. So Europeans consume almost 10 tons per capita, whereas we use much less than even 2. 2 is also not the limit which we have not reached. So there is a huge prospect for scope for growth in our country. We are a growing economy, so we are bound to grow. Our consumption of energy will grow because we have not reached the standard of living which an average American or average European enjoys. So India is bound to grow. But India is going to play a very important role in shaping the new discourse on climate change globally. Because India is a rising economy, India is going to be the third largest economy in the world. It is the third largest emitter today in terms of current emissions. Forget about the historical contribution which the Europeans and Americans have. But it's a growing economy and it's the third largest emitter today. So it has a very huge role to play in the kind of transition that we are going to make from coal, from oil to renewable energy. And that's the vision which Prime Minister has laid out. So we have to play a very important role. But unfortunately, as you said, the developed countries or the major economies of the world have not done as much as they should. In fact, they have not brought down their emissions despite the fact that they were asked to bring down. I think the war in Kyoto Ukraine clearly shows that their appetite for neither gas or oil has come down. Absolutely. They have circumvented entire process. Rituji, tell me one thing. You know, when we talk about fashion, the entire imagination is limited to the show. But then fashion is also about clothes. It's about sustainability. हिंदी में जैसे कहते हैं, इसमें कुटीर उद्योग भी आता है. Cottage industry is also come. How can clothes, sustainability, and greenness in context of manufacturing can be enmeshed? Is it possible? I think the whole world today is talking about green fashion. The whole world today is talking about sustainable fashion. The reason for that is, like Mr. Rashmiji said, that there is a lot of impact on the environment. There is a lot of kids today. I mean, I have a 15-year-old kid who comes home from school, and she is taught in school that you have to be very careful. It's your future in times to come. There's going to be no water. There's going to be, you know, winters are going to be summers, and summers are going to, in simple language. And I think that is something that is the future for us, to have our kids understand the impact, because they are not going to understand all these, you know, big words. They just need to understand that the world for you has to be a better place. And for that, you have to be as green, as careful, as vigilant as you can be. Coming back to what you said about fashion, I think we have to be very careful. We have to be very vigilant about what we buy, from the fabric to the garment. And what we produce. And of course what we produce, because everything is not about, you know, commercial, everyone is commerce driven. So it's a May very, I add very... the third thing, ma'am? Sorry? What can be repurposed? Circular economy, which Prime Minister spoke about. I agree. I think Mr. Modi has done an incredible job of creating awareness for the world, for at least for our country. And I do believe that we are blessed with a fabric like khadi. And, you know, khadi is a real symbol of sustainable fashion. It's a real symbol of a green fabric. There is zero carbon footprint. Khadi is, we used to call it the air-conditioned fabric, because you can wear it in the summer and in the winter. It's much, you know, we always believed it was a fabric for politicians. It was for senior citizens or for older people. But today we have a lot of young people wearing khadi, because they realize that there's so much variety,
It's not very expensive. Of course, you can get a very expensive range of khadi, but it is a true symbol of India, a true symbol of Make in India, and a true symbol of green India and a green fabric. So there are many options in this world. We just have to be careful, you know. And I mean, it's very, very easy to put the blame on others and say they should do it first. I think each one of us needs to take that responsibility to create the movement. So as a designer, I believe that in my organization, I put a stop to plastic, for instance. I put a stop to anything that is not reusable, something that is not organic. For instance, khadi is very, very organic. And what do you think that khadi needs to do, or khadi should be doing to even more broad base itself, you know? There's another session, but you know, because you spoke about khadi, you know, it's like a health food. It becomes a fad. It doesn't become your lifestyle, you know. You slip back into your old habits. What is required to broad-based this sort of a consumption? Yeah, but you know, to popularize khadi. Like you said, it's health-based and not a lifestyle. If you don't make living healthy your lifestyle, it is useless to do these binge diets and binge short-term things. So if we really want to create a change, and if each one of us takes it upon ourselves, that the world will change because of me. Because I really do believe each person creates that difference, makes that difference, and creates that opportunity. So if each one of us take it upon ourselves that I'm responsible to change this world, I think there will be a change. I think there will be a difference that we will see. For instance, in my kids' school, everyone's carpooling. Mm-hmm. You know, and at one time, each kid used to go in one car, maybe from the same destination. Now, that's a big change. Okay. Rashmi, you know, I was going through some data, and I found that the cost of the solar power in last 50-60 years has gone down by 84%. And the cost of wind down by 49%. So why don't we see that solar wind revolution? If the cost is coming down, why aren't we witnessing a revolution? It should have been a revolutionary change. That's an interesting point. Thank you very much. What has happened is that we are a coal-consuming country. I mean, even the US is consuming more coal than we do at the moment. But we are changing. In the last 15 years, what has happened is that the price of solar power has come down compared to coal-fired power. We have large number of coal-fired plants, but we also have solar power plants now. We have wind power. You are right. Even the coal consumption is up by 16% in the last... Yes, but coal is around 4 rupees per unit today. But solar power is around 2.5 today. So it's lower than, but it is a variable cost. You know, the cost of, the power when the sun is shining, but when during the night there is no sun. So you can't produce solar power in the night. Similarly, wind power, when the wind blows, you have wind power. So the variable cost of solar and wind power is lower than coal today, but it is not enough for us. Because we need power during the night, when we have the maximum peak demand of power. So we need to store energy. And that storage system is not available to us today, along with solar and wind. So if you include the cost of storage on the cost of transmission and the cost of banking the power, then the total cost goes higher than coal. So coal is still a very reliable source of supply for us, just as nuclear is. So nuclear fire, the hydroelectric plants, nuclear fired plants and the coal-fired plants, they are still the largest source of power because they are producing power 24 hours of the day. And they can raise the demand, according to the demand, they can raise the production as and when you reach. But it cannot happen in solar and wind. So what we need is a new technological innovation along with solar and wind to store the energy which we produce during the day. So is this the reason why that the integration of the DISCOM with the non-renewables is not taking place, which the people have been writing papers on? That's one reason why the DISCOMs are slightly averse to using a renewable energy, because they have long-term purchasing power agreements with the state governments, with the consumers. They are accessing power 24 hours of the day. So coal plants are still able to supply them power at a lower cost. But if they use only renewable energy, they can source the energy, but they cannot supply it when the peak demand goes up.
So that time they still have to resort to coal. So they are slightly reluctant to depend entirely on renewable energy. So we need a technological innovation, number one, and we also need a slight change in the energy policy, because energy pricing, because most of the discoms are constrained to supply power to the consumers in agriculture sector, industries at fixed prices, which are controlled by the state governments. Unless they have flexibility in fixing the prices according to demand and supply, they will find it difficult to rely only on renewable power. So we need a lot of change there. So then what remains India's biggest challenge in context of, we have set up priorities, we have very high and ambitious targets. How do we reach them? Because the global supply chains have become complex. The wars on one Cold War and another hot war like Ukraine and Taiwan has complicated Indian sector. And the reason why I'm asking you is, if we want to, for example, work the lithium way, then we are dependent on a country. And then repurposing the lithium is another challenge in itself, because once the battery is done, what you do, even that can create a lot of pollution in the soil. So what remains our biggest challenge in terms of achieving those goals, ambitious goals? Our goal, in fact, is ambitious, but I must tell you, give you a pleasant news, that our goal is to reach 50% of energy production capacity from renewable sources by 2030. Correct. That's one of the goals which Prime Minister has set for us, and that includes 500 gigawatts of renewable energy capacity, not in terms of generation capacity. And we have already reached against 50%, 42%. So you can see the 2030 is 8 years away, and in 2022, 23 as we talk, we have created a capacity of 42% of the total electricity generation capacity in the country is from renewable sources. Solar, wind, nuclear, hydro, all put together. But 42% capacity. Capacity is not what you consume. What you consume is generation. So in terms of generation, we are still at 20%. So from 20%, if we really want to change the entire energy system on renewables, we still have a long way to go. But we are making good progress. In the last 15 years, the progress has been remarkable. I mean, you won't believe the capacity of solar power was just about 10 gigawatts in 2008 or 9, if I remember correctly. 10 gigawatts. 10 gigawatts. Which is 10,000 megawatts. Okay. Can you believe how much it is today? It is, at the moment, it is 170 gigawatts. 170,000 megawatts just in the last 15 years. So it's a huge, tremendous progress. How was it achieved that, sir? You must have watched it closely. What were the basic things which were done? Investments, number one, and target set by the government that the renewable energy producers should set up. And they were given contracts, long power purchase agreements. So that is what started incentivizing the investments in renewable energy. And as you say, the technology costs have started coming down. See, investor basically looks for return or profit. Correct. And if the cost starts going down, they will invest. And that is what is happening. The cost of solar power technology has started coming down in the last 10 years because of scale, because of the high targets. And they get assured returns. So they have invested more, and we have been able to create that capacity. You know, you were talking about children, Rituji. You know, if you look at the business czars, they are also globally committed to the global green goals, but then they fly their planes. And in terms of carbon emission, their personal lifestyles don't reflect that. Do you think that celebrities and other people, in order to participate in the ambitious target which the Prime Minister has set, should also do an amendment to the lifestyle? Because it ultimately boils down to an individual. 4 people can travel in a car, 60 people can travel in a bus, mass transit program. You know, ultimately your individual acts make a lot of difference. That's exactly what I said, that if each one of us take responsibility and feel responsible that we will make the change, there will be a change. For instance, I remember that... Tell me, what do you do? How are you for one, a green conscious person? Like, for instance, the carpooling is one thing. I try to reduce
the use of our vehicles to the maximum. We try to, in the morning make a schedule. I'm talking about home stuff. We try to make a schedule so that there's one trip instead of 6 trips. That's one thing. When we go shopping, I mean, for my whole family, I try to make sure that everybody avoids shopping too much, and they try to use and recycle what they already have, which is a big thing, because does that make you a popular person in your family? I don't know if I'm popular or not, but they understand that it's for a good. I guess I save them a lot of money, so I help them recycle what they're wearing. I mean, the same sari can look very different if you rework it instead of going and shopping and buying something new. Also, I started a trend in our setup. Tote bags are very popular, canvas tote bags. Everyone used to go shopping and buy and pick up a shopping bag. And a lot of India and globally. Now, when you go abroad, they charge you for every bag you buy. It's a 0.25 cents or whatever. So I've told everybody, each one has been given a tote bag that you carry, and you don't use plastic, you don't use so many shopping bags. You have a tote that you chuck all your shopping into. I mean, these small things make a big difference, We are 1.4 billion people, am I right? 1.4 billion, or have we increased already? 1.2. Because every time I think of the statistics, we've increased. So I think if we make that difference, we are a real trendsetter. We can show the world, and under the guidance of Honorable Prime Minister, we are setting trends, because everywhere in the world that I go, they say, my God, your Prime Minister is a real star. The way he handled COVID, the way he does everything. You guys have the most popular economy, the most growing economy. So I think as people under a guidance of that and leadership of that kind, I think we can make all the difference. In terms of making the difference. Also, sorry, one more thing. Even beauty products now, when I talk about cosmetics, they are also very, very aware of organic and green products. You have an organic boom. You have shops all around which says organic. Yeah, but for a good reason, you see. And we can say that it's all blah blah and it's all talk right now, but it's the blah blah that converts into real living. You have to start talking about it. You have to start telling people. When I became an advisor for KVIC in 2016, if I'd been that's khadi. That's khadi. The people did not use khadi. I never heard about khadi. And then when we started working and we started talking about how trendy it is, how beautiful it is, every designer was doing khadi. You were using khadi for bridal outfits. I've done a bride in khadi. For Diwali, people were wearing khadi. So that was a change. It starts with one person and then it escalates. So I think each one of us plays a huge role. Rashmi ji, this word I used in context of fashion, but in context of our expanding economy. Prime Minister yesterday in his speech said he expects another no confidence vote in 2028 and will be a 3 trillion economy. It was part of a report in the Lok Sabha. But the point is that we are looking at a place where we are number 3 in the world economic order. In that context, what sort of disruption we need to bring about in your experience so that renewables get integrated into the non-renewables properly, synergized? Because we cannot say that fossil fuel will not be there. I think when someone is really living in a fool's paradise, they will have a role to play. But how do we increase the integration of the non-renewables? Yes. And renewables? Yeah. And as we discussed, it is happening. The transition or movement away from a fossil fuel based economy to a renewable energy based economy is happening now. As I said, in terms of capacity, electricity generation capacity, it's 42% that we can generate from solar, wind, nuclear and hydro. But the challenge is to feed it into the grid and make it available to the consumer 24 hours of the day. 24 hours day and night. So that challenge involves producing energy in a manner which is green, completely green. And so and where is this energy consumed? So that is what is the real challenge, because energy is consumed
in different kinds of economic sectors. You know, we use it in our homes for Correct. lighting and cooling. The industry uses it to produce cement, steel, textiles, a lot of things, plastics, everything, pharmaceuticals, chemicals, and these are all highly heat-intensive industries. They are extremely high users of coal and fossil fuels. We have transport industry. The transport, we have vehicles, automobiles, buses, trucks, they all ply on oil. So we need to change that. Agriculture uses high degree of fertilizers. Correct. Fertilizers are extremely carbon intensive. That's why Prime Minister is focusing on the millet campaign. Yeah. So agriculture, transport, industry, residential and commercial buildings, you name it, we use energy in different forms and different manner. So we need to change the way we produce energy and we consume energy. So how can we change? You look at, so there are two things you're talking about: produce energy and consume energy. So consumption of energy involves lifestyle change, like Rituji is saying. The way you use textile, the textile industry, the textile products, that involves a lifestyle change. You need to recycle it, reuse it, repurpose it, not waste it, reduce the waste, so that you minimize the fresh energy. Like energy-friendly buildings, where the maximum part of the time you get sun, so you don't end up consuming electricity. That's right. That's right. So similarly, in transport, we can use electric vehicles, fuel cell vehicles. We can use more mass transport. In industries, that is the real challenge, because industries produce almost 30% of our total emissions, and they are not easy. It's not easy to change. A steel production, for example, it needs coal. Today, it needs coal, and unless we use green hydrogen or gas, we cannot replace coal, because renewable energy from solar and wind cannot replace coal in steel industry. That's the scientific fact. So we need to change that. Can I ask you something? Because I thought I'll ask this question separately. Do you think blending in green hydrogen is the way forward? It is, certainly, as I said. And is it sustainable in long run? In the long term, like the way Americans shifted to shaling for some time 5 years ago. Oh, they use gas. Shale is gas, not green. Shale is certainly not green. It is natural gas, and it is a fossil fuel. So it is not green. But it is greener than coal. Correct. It's greener than coal, yes. Less carbon intensive. Yes. But the problem is, yes, if you can shift from coal to gas, you can reduce the emissions, but it is still expensive, more expensive than coal. So you can't afford to increase the prices of the steel and cement and all the products that you use in the economy. You cannot increase the... So when you reduce the emissions by changing the way you produce energy, you are also increasing the prices of the electricity, prices of all the products that you use in the economy. We have to be prepared for that. Is our economy prepared to do that at this level of development? That is the kind of balance which we have to achieve. But in the long term, certainly there is no doubt that in India, a country like India, which has very low resources in terms of energy, we have nothing else except coal. India doesn't produce oil. India doesn't produce gas. India doesn't produce nuclear energy. We don't have uranium supplies. So we don't have access to all the supplies that the other developed countries have. We have a severe problem to contend with here. So, but in the long term, we have to prepare a sectoral transition strategy as the way we produce energy, green hydrogen, and it's still costlier than coal by 3 times at the moment. But it is hoped that if we start producing on a scale, higher scale, then the cost starts coming down, just as solar energy costs have come down. In the next 15 years, it will hopefully. So, the question was, what do we do in the long term? Yes. In the long term, we prepare a growth strategy where we look at each sector differently. Transport, energy, agriculture, residential and commercial buildings. Each sector has its own requirement in terms of energy. We produce that energy in renewable or green form. And secondly, most importantly, we change the lifestyle. The way we use the products. We use the timber, plastics, steel, textiles. We need to reuse, recycle without wasting the natural resources. Then we will be able to contain
this severe problem of climate change. And I think at the end of the session, I would also say that the climate change has, as you very rightly pointed out, has changed a lot of things for us. For example, there's a word in Hindi which everyone would know is associated with monsoon, puhar. But if you look at the rain pattern, it's like a deluge. The sort of rain which Delhi has witnessed in 2 years is like someone has opened a water tumbler from upstairs. You know, this is very unlikely of a monsoon, which would have been a very gradual drench. And secondly, the patterns have changed. The western part has become wetter. The eastern India is becoming slightly drier. So I think what we also require, which we call is disrupting technologies, disruptors, so that we can make best of, unfortunately, what we have created, because now the capping is supposed to be at 1.5 degrees Celsius, and this is the reality. So for in this context, the whole goal setting in context of a green India and India setting the lead for the world for lower carbon consumption is very, very important. And on this note, I thank both of you for participating in this special edition of our program, My India, My Life, My Goals. Thank you, all of you. Thank you so much, Karthikeya. Thank you, ma'am. Thank you, sir. It was great hearing you out. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, Karthikeya. It was great hearing you out. And I think इस सेशन के बाद क्या हम ये कह सकते हैं, Karthikeya? We should reuse the past, recycle the present, and save the future. Done. Thank you so much. So the many more interesting facts that you're going to witness today at this conclave, and many more special initiatives that we've been talking about. And because it is My India, My Life goal, so I'm sure when we talk about lifestyle for environment, there are a lot of changes that we need to adapt, and there are a lot of things that if you wish to ask from our panelists, you are open to. Do let me know if you wish to speak to them, if you want to know something, what are the changes and the habits that we need to adapt in our lifestyle. Of course, that's why I said recycle the present, save the future, reuse the past, because we have a lot of expertise here, a lot of people who have been working on these efforts and initiatives. So I think it's a great opportunity for all of us to talk and discuss. Anyways, okay, let me introduce to the special guest that we have, and from TV9 Network, we have our Chief Revenue Officer, Mr. Amit Tripathi. Thank you for joining us, Amitji. And Editor Convergence, Deep Upadhyay, we have along with us. Deep sir, I can't see you. Where are you? There you are, the man behind everything. We would like you to join us on the stage as well. And Group Editor Digital, Panani Anand sir. Panani sir, your presence is much needed. Much needed. The only man in the great traditional attire that you see here with a great personality is going to be in the hall soon, because I've been calling him and standing along with him behind. And I think Panani sir is going to join us soon now. Anyways, let me introduce to the special guest from Ministry of Culture. We have the Joint Secretary, Srimati Uma Nanduri ma'am with us. Thank you for joining us today, ma'am. And from Ministry of Culture as Joint Secretary, we have Srimati Amrita Sarbhai with us. Thank you so much for joining us today, ma'am. And let me tell you, we have Mr. Harish Gangwar with us, who's the Director of Finance from Ministry of Culture, as well as Mr. Rajiv Kumar, the Director from Ministry of Culture, and Priyanka Chandra, the Director from Ministry of Culture. I would request all of you to please join us on stage. Round of applause, please. I request if anybody could please call Panani sir also to join us. Deep sir. Thank you so much. It's a pleasure having you with us, ma'am. So I have Srimati Amita Sarbhai with us today, who's a Joint Secretary from Ministry of Culture. Well, a great capture. We are also going to felicitate the warriors who are with us today, and please welcome them. Can we have someone to please get the bouquets? Yeah. Sir, Deep sir.
Amit sir, please. I would. एक प्रकार से मोदी जी ने जो 5 प्रण लिए हैं उसमें से एक प्रण की अनुपालना करने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष, ये तीनों विधेयक दंड विधान प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेसिक कानून, इसके लिए मूलभूत कानून ये 3 विधेयकों के अंदर है। एक है इंडियन पिनल कोड जो 1860 में बनाया गया, दूसरा है